Muskan. I'm Ranal, and And we we welcome welcome you you to to M M Calling Calling M. M. By now, you must have realized कि हम दोनों flatmates हैं, and what could be the best topic to start with? Other than our old life stories. So, apart from our parents and our siblings, we spend the most of our time with our flatmates when we are living away from home. So, what could have been a better topic? I think after 11th or 12th, and even after graduation for some people, everyone has lived with strangers. I mean, individuals जो उनसे काफी अलग है, and they have moved out of their places and then started living in a dorm or what you call a hostel, then living in a flat in some situations. The Amir ones, bro. Yeah, They have exactly. flats. But who was your first flatmate or a roommate? I think that's a very funny story. Mine was a Oh mice. my god. Chalo, at least mine was my brother. But since you have encountered so many people till now, because I think I moved out after my 12th for my undergraduation. Same for me. I moved out after my 12th. So we have just lived with so many people, and I think by now we know कि क्या qualities होने चाहिए and क्या definitely नहीं होने चाहिए. Yeah, totally. So I think the first and the most important quality would be the person should be clean. Yes, I would want my flatmate, roommate, or whomsoever to be a Swachh Bharat representative. Huh. So keep the space clean and I think keep yourself clean as well. Yeah, I think I have a story wherein a person whom I was living with used to litter around Oh my everywhere. Like god. कुछ भी खा लिया बस फेंक दिया जहाँ पे वो है नहीं है ये वो एंड विद द फैक्ट कि अगले दिन तो दीदी आके साफ कर ही लेगी एंड आई थिंक दैट्स वेरी यू. That's just you, bro. I have a very opposite experience. जो currently अभी हमारी third flatmate है. So me and her, we were living separately as well before Manal joined us. So one morning I woke up and I went to the kitchen for breakfast. And what do I see? I see her with a scotch, right? And वो लगी हुई है platform साफ करने में. And I was like, is this a dream? Is this happening in real? कि weekend में सुबह सुबह साफ कर रही है. And I asked her कि bro, why are you doing this on a weekend? कहती है ब्रो कुछ और करने को नहीं था बहुत गंदा लग रहा था आई थोड़ी यही कर लेती हूँ. My God, that's so good. Actually, I don't think I would start my weekend like that. But definitely उसके बाद हमारा kitchen was like spotless. The other quality after cleanliness should be respecting the privacy of the other person. yeah, I think minding your own business kind of a thing. कि you are not intruding someone's space, giving them their kind of room or whatever you called, wherein they are in their own zone. Definitely. I mean, I have been in a place, the first place where I moved out to was a room where it was an eight sharing place and उसमें से four bunk beds there. But bro, the best part about it was Mm-hmm. कि no one invaded each other's privacy. हम अगर अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं in my bunk, कोई शोल्डर स्टॉक नहीं करता था, कोई ऐसे देखता नहीं था कि कौन क्या कर रहा है. सही है It यार. just felt very, very secure. Our business is our business, none of your business. I think the third most important quality of a roommate or flatmate would be considerate. Definitely. Yeah. I think a person should have empathy wherein अगर एक इंसान बीमार है तो दूसरा एटलीस्ट ये ना सोचे कि मैं क्यों उसके लिए ये करूँ मैं क्यों उसके लिए वो करूँ बट हेल्प कर दो यार मतलब थोड़े टाइम के लिए ही है एंड वाइस वर्सा इट्स नॉट लाइक सिर्फ एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट रादर अगर किसी और को जरूरत है उसी सेम फ्लैट में तो दूसरा पर्सन भी करेगा ही. But I think, bro, you have gone too far. तबीयत खराब होना is, I think, the extreme part. But I'll tell you what happened in that 8 room dorm. So I had the upper bunk and मेरे नीचे वाले bunk पे जो लड़की थी ऐसे तो she was fine but उसको रात में कुछ हो जाता था. क्या? वो ना I think she had a boyfriend जिससे वो रात में बात करती थी and she used to giggle a lot and वो पता नहीं हवा में किक कर करके बहुत तेज तेज हंसती थी. And
I have talked to her also कि bro I'm trying to sleep because हमारे 7 o'clock के lectures होते थे सुबह and उस टाइम पे ना मैं रेडी होकर जाती थी कॉलेज. So I used to wake up around 6:15 जिसके लिए सोना पड़ता था बट ऐसे कैसे भाई मैडम तो एयर किकिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ और it can be something else also you never know. Okay. But in these terms, now I had a very bad kind of experience. When I was in Bangalore, and I think there were two roommates who were earlier only staying there, and I was the third one. I moved in for just like 1 or 2 months के लिए ही. So I did not unpack all of my things, but couple of days when I started living there, and I wanted to use a bartan or a vessel for just making chai, and they were like, "Ki nahi, you cannot touch our Excuse me, things." And I was like, how weird is that? And then ये they, तो untouchability नहीं हो गई? hi, Oh my I tell god. you, people, I think people sometimes forget कि सामने वाला भी इंसान है. हाँ, absolutely. Oh my god, this is untouchability. Like, Bro, FIR लॉन्च कर सकते थे इसके लिए. भाई, sometimes they used to be like कि no, this is our space. Even like main hall room में they were like कि हम अगर टीवी देख रहे हैं तो you cannot come. हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, आंखें बंद करके आ जाती हूँ. मतलब मैं भी उतना ही रेंट पे कर रही हूँ Oh my जितना टू. god, तो I think the fourth quality that we would want to talk about is the flatmate or the roommate should know the difference between borrowing and sharing. तो yes. लेके जा बट एटलीस्ट पूछ ले एक बार. आई मीन आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं क्यों सामान दूंगी नहीं या शेयर नहीं करूंगी बट आई शुड नो व्हाट आई एम शेयरिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं सो रही हूँ मेरा चार्जर गायब हो गया हाँ. कि भाई चार्जर का है कहीं तो है. I think that's more likely कि consent is very important. डेफिनेटली. तुम्हारी बेसिक चीजें तुम ले जाओ when the person is sleeping or not available. That's okay. And but after that Bro, person I comes, don't say it's okay. At least, let's say if I'm not at home and you're taking my charger, text me कि bro I've taken your charger. वापस आके मुझे पता तो बता. होना हाँ चाहिए कि मेरा भाई. चार्जर कहाँ है. तो इसी इसी रिलेटेड एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज इन यूजी वेयरइन मेरी जो सीनियर थी शी वांटेड अ ज्वेलरी पीस ऑफ माइन एंड आई टोल्ड हर कि हाँ ठीक है आप जाके मेरे रूम से ले लो करके इट्स ऑन द टेबल और इन माय कबर्ड और समवेयर बट ही वेंट थोड़ा अहेड थोड़ा. Are you थोड़ा sure? आई डोंट थिंक थोड़ा बट she scanned my cupboard Oh my and then god. she took my whole jewelry box. Oh my god. And I tell you, after that, during our ethnic day, because it was the same day, I could see all of our friends wearing my jewelry. Oh my And I god. was like, अरे ये तो सारे मेरे pieces है. And then I had to go back to them asking कि यार वापस कर दो अब. Oh my god, that is just so bad. Yeah, it is. एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले. The other quality that we would want our, we all of us want our flatmates to have would be being जिम्मेदार. Definitely. यार कहीं जा रहे हो तो बता के निकलो. अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लेट्स से इन टर्म्स ऑफ ओनर्स या फिर पेरेंट्स तो यू शुड बी दैट रिस्पॉन्सिबल. Bro, बता दो डिनर बनवाना है कि नहीं बनवाना है हाँ. एंड क्या खाना है. हाँ वो तो है प्रेफरेंसेस पहले से ही पता होने चाहिए. बट ब्रो आई टेल यू इट्स अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड स्टोरी. तो हमारे एक्स पड़ोसी थे तो उनके साथ क्या हुआ उनका एक फ्लैटमेट था एंड ही वेंट टू पार्टी विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एक्सेट्रा एंड दिस इज एक्चुअली कमिंग वाया वाया. सो हमें ऐसा बताया गया कि वो रात में दो लोग गए खाना वाना हम्म. लेने कि लेट्स गेट सम फूड एंड ओनली वन ऑफ देम केम बैक एंड देन उसके बाद ये सारे मिलके ढूंढ रहे हैं उसको कि वो गया कहाँ. था कहाँ वो. आई डोंट नो. No one knows. ये रात उसी के साथ चला गया bro. अरे बाप रे डिड ही शो अप. I'll tell you what happened उसके बीच हाँ. में. He did show up. He's alive. He did show up. बट उसके बीच में हमने उसके फ्लैटमेट्स को फोन किया जस्ट टू चेक कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा हाउ इज इट लाइक. तो उसके फ्लैटमेट ने बताया हमारे फ्रेंड्स को कि वो नहीं पहुंचा. तो उसके बाद फिर सब ढूंढने लग गए उसकी फोटो दिखाने लग गए कि आपने इसको देखा है आपने इसको देखा है. उसके बाद what I got to know was he showed up at 5 a.m. in the morning. ओह
My and God. and it was just so reckless कि भाई 5 a.m. कैसे, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे? Such a dreadful night for all of his flatmates, even friends, यार. वो जिस लोग के साथ भी गया था जिन्होंने हमें बताया, तो भाई 5 a.m. रात भर वो उसको खोज रहे थे. It was like Mr. India. I think the next and very important quality that we would want in our flatmate or our roommate, that he or she should not be chindi. Yeah, money matters. And I think it's not about being chindi, it's about just paying your rent before you pay for your Netflix subscription. Right. Because even if you are closely bonded with that person, and if money comes in equation, then I agree, bro. And हो जाता है, I think. So I'll tell you a story. So one of my flatmates, she was moving out, and यहाँ पे कैसा होता है that if you are moving out, so you give your replacement if the lease is still on. So we found a replacement for her. Owner was okay, everything was okay. But something happened, and well, not a good thing. But something happened that she had to move back in. So she spoke to that replacement girl, and she spoke to owner also, and everything was fine. But so electricity bill बाद में आता है. And my flatmate, my original flatmate, she had even offered her that because she's going through so much hassle because of her, she'll pay her rent. why? Bro, she paid for her entire rent. Shit. ठीक है. And इसके बाद when the electricity bill came, so I forwarded the bill to her. I did not even send the amount and send, bro, this is the bill. So we should split it 50-50. वो मेरे को क्या बोलती है, कहती है मेरा तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था, मैं रोज ऑफिस जाती थी, एंड मैं तो रात में सिर्फ 1 घंटा एसी चलाती थी, तो आई विल नॉट पे दिस बिल. एंड कैन यू गेस दैट अमाउंट? How much was it? Like, It was 1K per person. my God, like even if she was in the house, she has to pay. मतलब रात को Exactly. एसी चला के तू एंड मैं उसके रूम में थोड़ी जाके देखती थी यार कि 1 घंटा चल रहा है, 2 घंटा चल, तुम चलाओ यार, बी कंफर्टेबल. yeah totally. आई एम नॉट पुटिंग अ स्टैब हियर कि नहीं भाई तुम टाइमर लगा के चलाओ, बट इफ यू आर यूजिंग इट देन बी ओपन टू पेइंग फॉर इट एज वेल. True. I think I have one more experience around this कि sometimes अगर एक ने जेप्टो कर लिया या ग्रोसरीज मंगा ली तो the next person should also contribute. So I'll tell you one more example which I have. तो 3 फ्लैटमेट्स थे एंड उनमें से 2 अपने अपने ग्रोसरीज अगर मंगा लेते थे तो दे यूज्ड टू नॉट पुट इट ऑन स्प्लिट वाइज. Oh, I've एंड not seen this. हाँ तो एंड थर्ड पर्सन शुड हैव द कर्टसी कि वो खुद से Definitely. मंगा ले. एंड ठीक है ना, मतलब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होता, मतलब सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, तीसरा नहीं कर रहा कुछ भी. Oh, फ्री का खाना. करती है क्यों पैसे पे तू मरती है. अरे माइक की बैटरी खत्म हो गई है, so we are shooting with one mic now. But following up on this, so the next quality that we would want our flatmate or our roommate to have is to be chill and not nag about everything. राइट. I think ये right ना सिर्फ मम्मी के पास होता है. ट्रू. When we are living with our parents तो होता है ना, ये सामान यहाँ पे क्यों रखा. हाँ तो एंड देन ये चीज ऐसी क्यों नहीं है, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना. ठीक है यार, डील विद इट योरसेल्फ. I think you are grown up. नहीं खाना तो टेल मी क्या खाना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं खाना. दीदी को बताओ भाई क्या खाना है. एंड फाइनली द लास्ट क्वालिटी इज अ सर्वाइवल शेफ. यस. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर दीदी नहीं आए या फिर देर इज नो ऑप्शन टू ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो. कोविड. या so I think at least you should survive in terms of making your own food. 2 दिन का खाना या फिर या किसी को हेल्प ही कर दो, बेसिक एक कोई आइटम बना के. इमोशनल सपोर्ट ही दे दो वहां पे हाँ खड़े होके, मोरल बूस्ट करके. इसीलिए वी आर सेइंग कि यू डू नॉट हैव टू बी अ मास्टर शेफ बट एक सर्वाइवल शेफ होना जरूरी है. द थिंग इज खाना बनना चाहिए खाने लायक. So I'll tell you a story. तो मेरी जो फर्स्ट फ्लैटमेट थी, फ्लैटमेट कम रूममेट, तो हम ऐसे फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, एंड शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक कि ठीक है कुछ बनाते हैं अच्छा सा. तो रोटी तो हमसे बनने से रही उस टाइम पे, तो यू आर लाइक अच्छा दाल चावल बनाते हैं. तो मी एंड थर्ड फ्लैटमेट वी मेड दाल एंड सब्जी.
एंड शी सेड कि मैं राइस बनाती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको, वी वर वेरी यंग, उस टाइम पे आपको क्वांटिटी का आइडिया नहीं होता है, तो उसने बहुत सारे राइस ऐसे बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए। एंड देन सब बढ़िया चिल कर रहे हैं, रूम सेटल कर रहे हैं, एस्थेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं। एंड देन एकदम से ना हमें जलने की स्मेल आती है। माय गॉड। हम जाते हैं बाहर, हम देख रहे हैं राइस जल गए। फिर हमने उसको आवाज लगाई कि ब्रो राइस जल गए क्या। हमसे पूछ रहे हैं, स्टिल वी हैड दैट कर्टेसी। तो वो आई कहती है, ओ नो शिट गाइस, राइस तो जल गए, मुझे लगता है पता नहीं चला कि पानी का क्वांटिटी कैसे लेना था। तो ठीक है, वी वर लाइक ओके नो वरीज, फिर से बना लेंगे। अब इतना सारा राइस था तो खाना तो हम वेस्ट करते नहीं, तो मी एंड हर वी वेंट नीचे जाके, वी हैड दिस स्टेशन वेरी क्लोज बाय। तो वहां पे से नीचे पूरा मार्केट था, एंड देयर वाज वन गाय जो वहां पे से बंदी रहती थी, तो यू कैन फीड हर एज वेल। एंड वो शायद दूध वाले भैया की थी। मैंने कहा ठीक है, गाय को खिला देते हैं, बाय गाय वी मीन काउ। फॉर द जेंजीज आउट देयर। हमने जो आपने फोटो देखी उसी टाइप की गाय थी, काओ थी। एंड हमने जब उसके सामने पैकेट खाली किया, तो हर एक्सप्रेशन वो समथिंग लाइक दिस, शी स्मेल्ड इट, उसने मुंह मोड़ लिया यार, उसने भी नहीं खाया वो राइस। गाय नहीं खा पाई है वो राइस, इतना क्या जला दिया था। And my flatmate was like, guys, respect my culinary skills because I made al dente rice. So some Italian chefs are looking for her to make al dente rice. सेंड ऑफ भिंडी कंप्लीटली। को काट, इतना इतना ही काट, वो जो क्यूब होता है ना, इतना 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 इतना। Guys, these are some of the qualities and our experiences that we have shared with you from the perspective that हम बहुत सारे लोगों के साथ रहे हैं, we have shared the same space. जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। Before finding your permanent roommate, I think you need to find peace and solace in your current flatmates, roommates, who are actually a family away from your family. And I think, guys, please go ahead and tell us about your experiences with your flatmates and your roommates. How have they been like? Good or worse. Happy or sad? So stay tuned and keep watching him, calling him, Like, share, and subscribe on YouTube. and follow us on Instagram. Bye. Bye.